Hello buddies, in last part I explained you in cost, that is the opportunity cost, and then monetary cost I explained you. Now we will try to understand here short term cost and then long term cost. So let's talk about first of all short term cost. According to the time period also, in short term monetary cost is presented. There are some factor of production whose quantity can be changed easily with the change of quantity of factor of production. So quantity of production also change. Raw material, extra labor, fuel are those factors which can be changed in short period of time. Means changing the labor cost, changing the raw material cost. Okay, whatever cost you can reduce or increase, that is called the short term cost. They are known as the variable cost. Expenditure on those factor is known as variable. Variable का मतलब जो बदलता रहता है, which has changed. In another hand, machinery, building and factory administrative staff cannot be changed. Once you establish it, it works till long. In short period of time, therefore they are known as fixed factor cost of production, and cost of such factor are known as fixed cost of production. Okay, first is the short term. A short term is such a period in which the producers cannot change the size of the firm less than 5 years, but it can increase the production by use the factor of production, but using the different factor they can increase the production. Short term in such a time period in which certain factor of production are fixed. Example, plant, heavy machinery, building. Once you have established or installed it, it will work till long. Okay, its cost come only one times. It has not repeated again and again. With increase or decrease of the variable factor like raw material, labor, electricity, the cost of machinery cannot be changed. Okay, can be increase or decrease. Next is your long term. Long term is a period in which the producer can change all the factor of production. So in this period all factors of productions are variable, means it can change. आप उसमें बदलाव कर सकते हो. For example, plant, heavy machinery, building, factory, because technology has changed, so many other aspects has changed, so it can be changed in long time. By increasing or decreasing this factor of production can be increased or decreased in long term. Producers can change the size of the firm, or doing so he can change the total production to large extent in a long term. Firm increase the size of the firm by new and modern technology, as I explained you. Now classification of production of cost. दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म एंड देन लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म को डिवाइड किया फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, and then it is the average fixed cost and average variable. First of all we will learn fixed cost and variable cost. Okay, प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, लेकिन उसमें जो लगने वाला जो कॉस्ट आता है वो फिक्स ही होता है, चाहे आप 1 यूनिट पैदा करो चाहे आप 100 यूनिट पैदा करो, बराबर है. इट इज जस्ट लाइक दैट कि मैं एक बच्चे को पढ़ाऊं चाहे 10 बच्चे को पढ़ाऊं, मेरी यूज होने वाली एनर्जी तो उतनी ही जाने वाली, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ओके, तो फिक्स कॉस्ट इज जस्ट लाइक दैट. फिक्स कॉस्ट ऐसी ही है. In short period, either production increase or decrease or remain zero. There is no change in the production cost. बराबर है. आप एक मशीन 5,000 रुपए में लेके आए, अब चाहे आप उसमें से 15 प्रोडक्शन करो चाहे आप नहीं करो, चाहे आप जो है उसमें जो है आप और ज्यादा प्रोडक्शन ले लो, उसका कॉस्ट उतने का उतना ही रहने वाला है, उसके कॉस्ट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं. So that is the fixed cost. That type of cost is known as fixed cost. Fixed cost is also known as the overhead cost. In short period, there is no relation between the fixed cost and quantity of production. Things are included in fixed cost. For example, permanent staff, rent of the factory, building,
हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आपने लगाया हुआ है, आप उसको यूज नहीं भी करोगे तो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेंट तो आपको उसको पे करना ही पड़ेगा। आप बोल नहीं सकते भाई हम यूज नहीं कर रहे तो व्हाई शुड वी पे। ओके, दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। इज इट क्लियर? सपोज आपने कोई घर लिया है, आप रह रहे हो, बराबर है, अब आप उसको नहीं भी रहोगे देन आल्सो यू हैव टू पे द हाउस टैक्स। दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कॉस्ट। आप यूज करो चाहे नहीं करो, यू हैव टू पे दैट, उतना खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, ऑल these understand with the help of cost, with the help of schedule and graph. See here, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट फिगर में देखो, यहाँ पे यूनिट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, कुछ भी यूनिट पैदा नहीं हो रहा है तो भी 100 रुपए खर्चा आ रहा है, और 10 में भी 100 आ रहा है, 20 में भी 100, 30 में भी 100, एंड एट लास्ट 50 तक प्रोडक्शन इंक्रीज किया, देन ऑल्सो कॉस्ट इज 100, एंड दिस ग्राफ विल बी शो लाइक दिस वे. I have written here 25, 50, 75 and 100, and each and every level it is 100. So 10, 100, 20, 100, 30, 140, and in that the total fixed cost graph will be parallel to x-axis. X-axis के parallel जाएगा, and like this way it will be framed. Okay. Second one, the same thing is given in your text, so I am not repeating it. Now we are going further. That is the variable cost. Variable मतलब जो बदलता रहता है, so many different causes. When cost incurred on variable factor by producer is called the variable cost. Okay. In short term, which is change in quantity of production, cost also change with the increase in production cost. मतलब अगर आप production cost बढ़ा दोगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। आप मान लो पहले आप लेबर को 70 रुपीज दे रहे थे, अब 100 रुपीज दे रहे हो, तो डेफिनेटली कॉस्ट विल इंक्रीज। ओके, एज इंक्रीज द चार्जेस, कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, कॉस्ट विल आल्सो बी हाई, और यू विल डिक्रीज द कॉस्ट। पहले आप 70 दे रहे थे, नाउ यू आर पेइंग द 50, देन कॉस्ट आल्सो रिड्यूस। Cost also increase, and with decrease the production, cost also decrease in the production is zero, then cost as zero, also zero. This is known as variable cost. Variable cost is also known as the unstable or direct or main cost. This cost has direct relation with quantity of production. जितना ज़्यादा production करोगे उतना ज़्यादा खर्चा आएगा. In variable cost, following things are included. For example, price of raw material, energy consumption, transportation expenditure, labor cost, tax, etc. As production increase, cost also increase, and therefore this is known as the variable cost. Difference between fixed cost and variable cost position in short period time only. Short period में आपको देखने को मिलता है, long time में दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं, उसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। When product, देखो यहाँ पे जरा इस शेड्यूल में देखो, वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन जीरो था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो था, लेकिन देखो एज प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। 10 यूनिट में 80 हुआ, 50 यूनिट में 390 तक पहुंच गया। ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू अंडरस्टैंड, इन 0 इट वाज 0, इन 10 इट इंक्रीज 80, ओके, बिटवीन 50 and 100, in 20 it increased 150, okay, and then 30 it 210, in 40 this is 290, and 50 it increase up to 390, ओके, 50 में जो है ये 390 तक पहुंच गया, यानी यहां से यहां तक में देखो 100 का उछाल आ रहा है, बराबर है। यानी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे इनके बीच का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 80 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, बराबर है, आप ये चेक करो, और 200 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है, और 290 और देखो यहाँ पे 100 तक का डिफरेंस आ रहा है, जबकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 60 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे लगभग 70 का डिफरेंस आ रहा है, बराबर। यानी एज प्रोडक्शन हैज इंक्रीज द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, वो भी जो है बढ़ता चला जाएगा। सो दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट हैज वराइज एंड ग्राफ इज अपवर्ड लाइक दिस वे। नाउ व्हाट इज टोटल कॉस्ट? तो फिक्स कॉस्ट
प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को मिलाकर अभी हम यहाँ पे ये दो ग्राफ प्लस इसका कॉम्बिनेशन तीन यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। बट बिफोर आई एक्सप्लेन यू द टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, देखो जरा, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट। If total production is more, the total cost is also more. जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा। ओके, एंड सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल। वो बात अलग है कि पर्टिकुलर टाइम में यानी कि बाद में दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पर तो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड बट वेरिएबल कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड। Total cost increase as increase in amount of variable cost, therefore total cost curve is about total variable cost. Note that the difference between total cost and total variable cost is constant because total cost and total variable cost are parallel to each other. Okay, which we can see with the help of this third graph. इस ग्राफ की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट में प्रोडक्शन लिया है, प्रोडक्शन इज कांस्टेंट 0 10 20 30 40 50 and which is expressed in x axis. After that total fixed cost, that is 100 as you can see in this one. Then total variable cost, this one. Now total cost means combination of this two, so 100 plus 0 equal to 100, 100 plus 80 180, 100 plus 150 250, 100 plus 250 300, 100 plus 290 390, 100 plus 390 490. Okay. Now first one you observe, this is the graph parallel to x-axis. Second one, total variable cost is moving like this way. When you add it, definitely it will increase, shift upward. So here you can see 0 100, यहाँ पे देखो 0 था पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे 100 हो गया। 10 180, 10 180, 20 250, 20 250, 30 310, 40 390 and 50 490, and that's why it is shifted little upward and parallel to total variable cost. Okay, ठीक है। So like this way we have tried to understood this. Now इसके बाद में in next one we will understand average fixed cost, average variable cost, okay, and other different concept and what is the relationship between the average cost and marginal cost, कैसे जो है दोनों के बीच में संबंध है। Okay, this one we will try to understand in next video. Okay, bye, see you all of you.